listening to Radio Azad and you are watching us on the Radio Azad Facebook page. With me on the segment, I have Atiya Naqvi. She is a life coach as well as a clinical psychologist. Assalamu alaikum, Atiya. How are you? वालेकुम आयशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ And such a pleasure to have you as always. I've been missing doing the segments with you. I really enjoy them. You have such a practical way of looking at things and pointing things out that we say we do in our everyday lives that we can certainly rectify. So आज का topic is about the pressures faced by our children. Some are placed by us, some placed by school, by society, maybe even their peers and their friends, and which can actually lead to dire consequences on our children. Parents have very good intentions, but we really don't know how to stay involved in our kids' lives. I think we perpetuate a lot of the things that we ourselves have experienced as children, and then we just behave in the same way, with our kids. So today, I'd like to first start off by exploring all the different pressures that our kids face, the types of pressures, and then go into how do these pressures manifest themselves, how do these make our children feel, and what should we be looking for when we are trying to find out कि ठीक है are really having dire consequences on our children, and then go into what are some of the ways that we can actually do a better job as parents. So that's always the goal, right? आई गेस यस आयशा इतना बड़ा फैला के तुमने मुझे टॉपिक दिया है जी सो आई एम थिंकिंग कि बात शुरू करते हैं जब बच्चा पैदा होता है वहां से जी पहली बात तो प्रेशर क्या होता है प्रेशर फिजिक्स ने जो हमें प्रेशर का लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया वो ये है कि जब आप एक फोर्स के ऊपर दूसरा फोर्स एक्सटर्नल इतना अप्लाई करें कि पहला फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या टूट जाए हम्म तो प्रेशर जो है वो हमें कोई भी एक्सटर्नल इमोशन या प्रेशर या एक्सपेक्टेशन वो होती है इतनी डालो कि जो उसकी ओरिजिनल चीज है वो तो टूट जाए ठीक है विल हो गई स्पाइन हो गई वलवला हो गया शॉक हो गया तो हम्म लव्स प्रेशर को बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें सोचना चाहिए मेरी टॉक्स में आम तौर पे मैं हमेशा जो बात कहती हूँ ना वो ये कहती हूँ कि हम ना सिर्फ अपने फराइज के ऊपर गौर किए जाएं और भागे जाएं मगर अपनी हाउ डू वी फील जब हम उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं हम्म तो बात वहां से शुरू होती है कि एक बच्चा पैदा हुआ और माँ अगर उसको दूध पिला रही है तो वो क्या महसूस कर रही है अगर वो उस लम्हे को महसूस नहीं कर रही तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन इमोशनली एब्सेंट मदर ठीक है अगर वो फोन पर है अगर वो सोच रही है अभी ये करना है अगर तो ये भी प्रेशर होता है क्योंकि वो बच्चा जो है वो उस वक्त जब दूध पी रहा है माँ का वहीं से बात शुरू हो जाती है कि ही इज नॉट बीइंग रिसीव्ड ही इज नॉट बीइंग अटेंडेड टू ही इज अ प्रेशर ऑन दैट मदर जो पिला तो रही है दूध लेकिन उसका दिमाग कहीं और है complete distraction, multitasking. और कंप्लीट एब्सेंस फ्रॉम दैट मोमेंट Mm. आप उस मोमेंट में एब्सेंट हैं अपने बच्चे की जिंदगी से Mm-hmm. आपने फर्ज तो पूरा कर दिया उसको ग़िज़ा दे दी लेकिन ग़िज़ा के साथ नर्चरेंस जो चाहिए थी जो नशो नुमा देनी थी आपको इमोशनल वो आप ना दे पाई Mm-hmm. और Mm-hmm. ऐसा आमतौर पे वो औरतें करती हैं कोई भी जान के कोई भी शख्स जान के बुरा नहीं कर रहा है इस दुनिया में ठीक है लेकिन बात यह है कि उस माँ को भी शायद उसके सर पे क्या है वो किस तरह की उसको पेरेंटिंग हुई सो लेट्स कम बैक टू हमारे बच्चों को हमसे चाहिए क्या Mm-hmm. हमारे बच्चों को हमसे प्यार मोहब्बत एक्सेप्टेंस और उनको महसूस करना चाहिए यानी बच्चा खेल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है अगर आप खुद ये सोच रहे हैं अपने एहसास में पढ़ नहीं रहा है इसको भी पढ़ना चाहिए था
So this is just a negative thought. How would you want that? क्या आप चाहते हैं कि अभी वो पढ़ने चला जाए? ओके, कितनी देर पढ़े? प्लान तो हो। अगर सिर्फ खौफ और वसवसा है आपके दिल में, सिर्फ घबराहट है, सिर्फ एजिटेशन है, then first figure yourself out. The root of everything, right? Knowing ourselves, knowing what we want, and then clearly communicating that with our Yes. children. There are enough studies now, empirical studies, which show कि जिन बच्चों को grade oriented पाला जाता है, या जिन बच्चों को compassion और mercy और दोस्ताना माहौल में पाला जाता है, आमतौर पे वो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जिन्हें ग्रेड्स के दबाव में नहीं पाला जाता, जिनके माँ बाप इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा बताओ, बट वो सवाल के पीछे नियत क्या है? घबराहट है, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्या कहाँ गया, बाहर गया। तो माई अगर बच्चे के कोई भी उम्र, एंड आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस, बट इट्स एन एक्सटर्नल प्रेशर जो कि हमारे खौफ, हमारे फ्यूचर, हमारी तरजीहात पे मबनी होता है। जब हम सिर्फ अपनी तरजीहात बच्चे पे को पालने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम बच्चे की जात की नफी कर देते हैं। इट कुड बी एनी एज, चंद माह का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, 13 साल, हम जब उसको स्पेस ही नहीं दे रहे, बिल्कुल, वो अपनी स्पेस फिर गैर फितरी तरीकों से, अननेचुरल तरीके से, इट विल क्रिएट इट्स स्पेस एंड मे नॉट बी टू हेल्दी देन। And you bring up such an excellent point, अतिया, के शुरू से फ्रॉम बर्थ, जैसे आपने कहा, हम प्रेशर डालते हैं बच्चों पर, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ समथिंग, जैसे व्हाट वी हैव काइंड ऑफ learned from our upbringing and our experiences as well. लेकिन जो है बच्चा जब छोटा होता है, it different, of course, academic pressure, like you said, has always been there, but then it's potty training or khana, that's like a big thing. Finish everything on your plate, and so many children develop such poor eating habits, eating disorders, simply because of the way that we have brought them up. डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना, पूरे घर में चेस करके खिलाना उनको, finish everything, it's a mess the way we develop these eating habits in our children. And then as the child grows up a little bit, जो middle school में उनके pressures होते हैं, जो religious pressures हम डालते हैं उन पर, socio cultural pressures डालते हैं, always you need to look प्रेजेंटेबल, लोग क्या कहेंगे अगर आप इफ़ यू डू दिस, और इसके साथ यू सोशलाइज with a certain group of people, then how are you going to be perceived in the community. बच्चों के ऊपर स्कूल के बहुत प्रेशर्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं, कंपटीशन, हम जो ऑफ कोर्स दे हैव प्रेशर्स विद इन स्कूल एज वेल, amongst their peers, लेकिन जो हम प्रेशर्स डालते हैं कि फलाने का बच्चा is doing so well and got into this particular university, you also have to go into an Ivy League school, and or a private school or Ivy League school. And then as the child matures, right, then we get after them for their graduation, job, shadi is a huge pressure that we put on our kids. This poor 20 something, early 20s में societal pressure शुरू हो जाती है, क्योंकि whenever they go out, the aunties and uncles, but more aunties, always say, oh beta, you're next, or oh beti, you're next. And so much so that young adult doesn't want to go out anymore, in our circles, because that's all that they are hearing. And then we don't make it conducive for them to even meet other people, because our societal structure is not set up that way. It's like, oh hi, this person is meeting with this person or talking to a member of the opposite sex, that all goes out in the communities.
So what I'm trying to say is that all these different pressures, that child is being bombarded from so many different angles and so many different types of pressure. What is going through their mind in trying to deal with all of this? आयशा, अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारी सभी नैरेटिव में था। बच्चों पे प्रेशर खाने का डालते हैं, वो बच्चा जो है वो खाने से उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं। Mm-hmm. शादी का प्रेशर डालते हैं, वो बाहर जाना बंद कर देता है। इट्स रिजेक्शन। द चाइल्ड स्टार्ट्स टू रिजेक्ट एंड विथड्रॉ। Mm-hmm. जब प्रेशर डालेंगे तो पेरेंटल प्रेशर का फोर्स बड़ा होता है उसकी जिंदगी में। बच्चा उम्र के किसी हिस्से पे होगा, वो प्रेशर से विथड्रॉ करता है। ठीक है। और विथड्रॉल जो होता है वो इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, अग्रेसिव भी हो सकता है। इट कुड बी इन सो मेनी मैनर्स। Mm-hmm. यानी कि आपने खुद अभी अपनी बात का जवाब दिया था कि जब हम उनके पीछे ग़िज़ा कि भाई ये खिलाना है, ये सही है, ये हेल्दी है, रिगार्डलेस ऑफ कि मेरा बच्चे को पसंद क्या है, व्हाट विल बी हेल्दी, व्हाट डू विल दे लाइक, बायलैटरल नहीं है। Mm. किताब में पढ़ लिया कि ये खिलाना है, खुद चाहे आपने सारी उम्र जिंदगी में दलिया ना खाया हो लेकिन बच्चे को दलिया खिलाना है। देयर इज अ जेनेटिक मेटाबॉलिज्म आल्सो। Mm-hmm. अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंसिंग। माँ बाप जैम पराठा खा रहे हैं, उसको दलिया खिलाया जा रहा है। Mm-hmm. सो point is not into menu, point is integration of माहौल। हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ पाल रहे हैं, और उसका बैलेंस किस तरह निकाला जाए। Mm-hmm. बिल्कुल। इसी तरह आप चाहे शादी की जब अच्छा अब जब आप एक तरीके से पले बढ़े, पाल एक और माहौल में रहे हैं, इंटीग्रेशन के लिए द ओनली टूल वी हैव इज लैंग्वेज, Mm-hmm. एंड इट हैज टू बी अ बायलैटरल लैंग्वेज। तो आप ये कह सकते हैं हम बेटे पराठा खाते हैं बट सुना है दलिया इज हेल्दियर, सो इन्फेंट मे नॉट अंडरस्टैंड इट, बट आपकी कॉग्निटिव, आपकी सोच तो और कि मैं इसको दलिया क्यों ठुसा रही हूँ, और नहीं खा रहे। इसी तरह जब वो शादी के लायक होता है, बेटे भाई हमारी तो 20 साल में हो गई थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, तुम क्या चाहती हो, हाउ डिफिकल्ट इज दैट। Mm-hmm. एंड इफ माई डॉटर और सन गोज टू अ वेडिंग एंड कम्स बैक, आई डिडंट लाइक हर आंटी ये कह रही थी, Mm-hmm. तो सुनिए तो सही कि आई डिडंट लाइक अगर बच्चा कह रहा है तो गैस लाइटिंग ही होती है। नहीं, नापसंद करने की कौन सी बात है, वो तो बड़ी अच्छी है। शी इज नॉट इवन हियर, द आंटी इज नॉट हियर, व्हाट इज हुज हियर इज योर चाइल्ड, Mm-hmm. हियर देम। उस वक्त हम आंटी का झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि वो ठीक कह रही थी और ऐसे ही होता है। वी अगेन pushed our child into, we want them to disappear and we want the auntie to be there, Mm-hmm. metaphorically। आप सुनिए, क्या बुरा लग रहा था तुम्हें, मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, हर कोई मेरी शादी क्यों बात कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये करना है, फाइन, आई हियर यू। और इफ यू डोंट वांट टू हियर देम, बेटे बट मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि तुम पढ़ती रहोगी, शादी नहीं होगी। गेट इनटू अ डायलॉग, उसको स्पेस तो दें कि वो इजहार करे। Mm-hmm. That. हमने जब बात शुरू करी थी, Mm-hmm. प्रेशर, प्रेशर जो होता है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह नहीं मिलेगी ना ऊपर, तो वो टूट जाएगी चीज। हम भी जब बच्चे को स्पेस नहीं देंगे तो वो टूटने लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो that's a foreign concept as far as our households are concerned. We have a caller, and I will remind our listeners you can tune in to us on the Radio Azad app, which you can download. It's absolutely free. And the studio phone number to call is 972-501-9390. We also have a WhatsApp number that you can call from anywhere in the world. 972-741-3883. Let's take our caller. Radio Azad, you are on the air. जी सलामुकुम आयशा एंड अतिया। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है कि एक मदर जो टीन एजर्स के साथ है और वो अपने मुल्क से दूर है और इस तरह के माशरे में है जहाँ ओपननेस, जहाँ फ्रैंकनेस और जहाँ एक्सप्रेशन ज्यादा है, आप क्या सजेस्ट करेंगी उन माओं को कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट करके उनको
गुड एंड बैड पॉइंट्स देते हुए जिंदगी को रियल मायने में समझाएं। किस तरह वो समझाएं? नई मदर्स तो मैं नहीं कहूंगी कि टीनेजर मदर जो बच्चे हैं उनकी मदर्स जो है, क्योंकि वो दौर रिबेलियस दौर होता है, बच्चा चाहता है कि जो वो सोच रहा है वो करे, ना कि माँ बाप को फॉलो करे। तो आप उनको कैसे, हाउ टू कम्युनिकेट विद दोज टीनेजर्स एंड हाउ टू कन्विंस देम एंड शो देम द गुड एंड बैड ऑफ लाइफ। Right? I think that's the whole crux of the matter. जी हाउ टू डू देखिए दैट? जी श्योर ओके देखिए जी मैं और आप गुड और बैड डिसाइड करने वाले माशरे का कोई नहीं है। सबसे पहले तो मुंसिफी अपने पास से हटा लीजिए। हर साइंस भी कहती है जजमेंट के साथ जब भी आप शुरू करेंगे आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। जब आप बात को प्यार मोहब्बत और एक्सेप्टेंस से शुरू करते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल खुला रहता है। जब हम ये कहते हैं ना कि हम सही और ये गोरे गलत हैं, गोरा लैंड में वो पल रहा है, उसका पीयर ग्रुप उसी में है। सो सबसे पहली टिप ये है, गलत सही से निकल आइए। अगर आप कम्युनिकेशन चैनल खुला रखना चाहते हैं ना, आप ये कहिए हम इस तरह थे, मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, हमारे मजहब में ये जायज है नहीं जायज है, हमारे कल्चर में। यू आर साइको एजुकेटिंग देम अबाउट योर कल्चर without any judgment of the culture where you have chosen to bring them and raise them. आप अगर ये इतना ही गुनाहगार और बुरा कल्चर था तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ की कई चीजें अच्छी भी हैं, हम आराम से रहते हैं, बत्ती नहीं जाती, whatever, right? So we've made a choice to be here. Let's not sit and judge anyone. अच्छा और बुरा कहने का हक नहीं है, पसंद नापसंद का हक हमारे पास। Say that again, Atiya. अच्छा और बुरा कहने का हक हमारे पास नहीं है, पसंद नापसंद का हक हमारे पास है। Got it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We each have the prerogative to say, I am not comfortable with this. I feel really uncomfortable with PDA, public demonstration of affection, और nudity, और जो कुछ भी है। लेकिन जब हम ये बात कहेंगे आपकी औलाद 110% सुनेगी, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। बट आप ये कहें ये तो बहुत गुनाह का काम कर रहे हैं, you will stop making sense to your child. They will tune you out. And it's a totally different way of looking at things because, you know, we were taught a certain way, and I keep going back to this point, and we think that our children are the same, in the same age or the same times that we grew up in. And actually, you know, they're not. My daughter the other day said, you know, Mama, people have to change the way, or parents have to change what they think about the way people dress these days. For example, you know, torn jeans is such a simple example, but there's so many things. I mean, for us growing up, that was unheard of, right? Ke, oh my God, phate hue kapde. But it's so in, and it's like everybody is wearing them now, like all the young children. So we have to, it's such a simple example, but we have to change the way we think about these things, right? In terms of You know, Ayesha, can I cut you? Yeah. I think you're making this point तीसरी दफा कि हम ऐसा सोचते हैं जैसे कि हम पाले गए. Right. The fact that you have repeated this is a great sign that you are not thinking like that. You're not comfortable. You are reminded. बारी बारी आपको याद आता है आपके बचपन में आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई. ये याद आता है. Right. ऐसा नहीं है कि सोच यही है. जब मैं कहती हूँ ना अपने आप को समझाएं, अपने आप को समझें, आपको ख्याल जरूर आता है हम तो ऐसे पले थे, मगर अब बच्चे टॉर्न जीन्स पहन रहे हैं और बच्चों पे आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, अफसोस नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा. यू आर जस्ट नॉट श्योर हाउ टू रिस्पॉन्ड. Right, right. And I know I'm not the only one struggling with this issue. या सो इफ यू आर नॉट श्योर ओनली, श्योरिटी के लिए आपके पास आपकी अपना सोच के कुछ तरीके, कुछ मुहर्रकात बनाइए कि what is more important. Exactly. The issue is torn jeans, value system, communication. ये मामला फहमी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब पेरेंट्स
दिखाते हैं बच्चों को, तो कल जब बच्चे आगे जाएंगे तो वो भी अपना पास्ट साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उसको उन्होंने रिजेक्ट करना नहीं सीखा होगा। हमें और उनमें फर्क शायद ये है कि हमारे पास यह ऑप्शन ही नहीं था कॉग्निटिवली, सोच में, कि हम अपने पेरेंट्स को या माहौल को रिजेक्ट कर सकें ओपनली। या लेकिन हम भी स्क्वर्म करते थे, उलझा करते थे, फलां आंटी आती हैं तो ऐसे होता है। हम भी, कोई भी टीनेजर किसी भी जमाने में 110% अपने माहौल से इन एग्रीमेंट नहीं होता, ये साइंस कहती है। That's how the teen brain works. Because they are creating a new adult Yeah. based on their parenting and going into the world that they are. हम भी किताबों में छुपा के किताबें पढ़ते थे, हमारे अपने रिबेलियस होने के तरीके थे, ठीक है ना। जल्दी से लिपस्टिक, नेल पॉलिश कोई ऐसी लगा ली जो कि कलर वाज नॉट अनहर्ड ऑफ, व्हाटएवर। रिबेलियन मासूमाना छोटा छोटा होता है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट in clash with your legal system where you're living, your religious system, Yeah. and even then you can just inform them ठीक है. after a certain age. We actually have a couple of callers, Atiya, so let's take them on the air. Radio Azad, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम टू बोथ। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका सवाल। मैं समझती हूँ इतनी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है। मेरा छोटा सा 1 मिनट का पॉइंट ये है कि राब्ता सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरे लिहाज से, कम्युनिकेशन। और वो इस तरह हो कम्युनिकेशन कि आप अपना पर्सपेक्टिव लें, बच्चे का या सुनने वाले का पर्सपेक्टिव लें, और फिर इस तरह से कन्वे करें जैसा कि एक सजेशन हो, एक एडवाइस हो, बट इट हैज टू बी स्प्रिंकल्ड विद अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। मैंने देखा है जहां कॉम्प्लीमेंट सिंसियरिटी के साथ देंगे, अपने पर्सपेक्टिव के साथ, दूसरे का, लिसनर के पर्सपेक्टिव को समझते हुए और एक कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए, मैं समझती हूँ इंटरैक्टिव होना, पोलाइटली विद रिस्पेक्ट, गिविंग room for their opinions and feedback. अपना थोपना बहुत गलत है, और जिस तरह से बोला जाता है, टोन ऑफ वॉइस, टाइमिंग और गुफ्तगू का अंदाज conveys a lot of positivity and feedback from the other party. मैंने देखा है बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह, अपने बच्चे, नेफ्यू नीसेस, कि जब भी एक अच्छी बात करके साथ साथ अपने सोच का, अपना नजरिया कन्वे करने से एक किस्म का डायलॉग स्टार्ट होता है। इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल 95% ऑफ द टाइम। कॉमन अपने हम्बल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू। रेडियो आजाद, you're on the air. जी, मैं बहुत पसंद किया कि आपने अतिया कहा कि गुड एंड बैड नहीं है, लाइक एंड डिसलाइक है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, हर चीज बदली हुई है। लेकिन आप क्या कहेंगी कि 0 to 7 की डीप हमारी इम्प्रिंटिंग, डीप प्रोग्रामिंग, जब देसी, मैंने बहुत सौ को देखा है जब यहाँ आते हैं और एक जिंदगी लंबी गुजारते हैं, इसके बावजूद जो जहनियत होती है उससे निकल ही नहीं सकते। और अपने बच्चों पे शादियों को जिस तरह मैं इम्पोज करते हुए देखा है, और जिस तरह ऑर्डर चलाते हुए कि अगर तुम नहीं मानोगे यहाँ से निकल जाओ। सो हाउ टू कन्विंस दोज काइंड्स ऑफ माइंड्स, यू नो, कि नहीं, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट एज एंड डिफरेंट टाइम, जहाँ दुनिया जो है ग्लोबल, उसमें हम सब देख रहे हैं। तो वहाँ उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी? All right, and thank you for your question, Shahnaz ji. We have all the lights blinking, Atiya, so we'll take the questions. Radio Azad, you're on the air. नमस्ते आयशा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी कि बच्चों पर शादी के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पढ़ाई के लिए आप उसे खूब खुशी से, अच्छी तरह से बातें करके, उसके इतना अच्छा व्यवहार उसके साथ करके उसको आगे बढ़ाइए, अच्छा स्कूल में डालिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके लिए जो कुछ भी उसे बताना है, सिखाना है, अच्छी तरह सिखाए। जब वो अपने हाथ पैर पर हो जाता है और जॉब करने लगता है, तब भी तुरंत शादी के लिए नहीं प्रेशर डालिए। आजकल के बच्चे, चाहे आप जो भी कहेंगे, वो करेंगे अपने मन से शादी।
माँ बाप की शादी के लिए कोई बच्चे नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। और जब पढ़ाई हो जाती है, जॉब मिल जाती है, तब प्रेशर भी अपना दूसरी तरह का हो जाता है। तब वो भी चाहते हैं कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अब सक्सेसफुल हो गई हूँ, चाहे हो गया हूँ, तो फिर मुझे अपना जीवन के लिए भी एक जीवन साथी बनाना है। तो वो भी अपने मन से, ना पेरेंट्स की चॉइस से। Okay, thank you. Thank you, Mamta ji. Radio Azad, you're on the air. जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड डॉक्टर अतिया। वालेकुम अस्सलाम। जी शायद जी। ना जी, मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम एंड बट आई विल से दैट जैसे डॉक्टर अतिया ने कहा कि बच्चे जो हैं दे लिटरली फील द हमारे उसमें जो है इमोशंस में आल्सो whenever we are talking to them also I think we have to take a breath and then talk to them in a positive way because that the other day it happened with me also and I was talking to my son but I didn't even it was on the phone and he could actually hear me what is going on. We were not even face to face. Mm-hmm. And then but that is one of the other things that we have to be very careful of this thing. Mm-hmm. He heard the emotion in your voice. ठीक है. Exactly, that's right. So that is the first step, I think, whenever we are communicating. Mm-hmm. The communication is very important. और वही जो है जो अदर चीज के हाँ हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हम लोग जो है हर उस चीज में नुक्स निकाल रहे हैं कि इनका ये अच्छा नहीं है, इनका ये अच्छा नहीं है, तो what are we doing over here then? That is such a good point, Shahida ji. Thank you so much for that. Atiya, आपने देखा है in your interactions with parents. Let me just take this last. Okay, I think somebody's been trying to get through. Radio Azad, you're on the air. हाँ, नमस्ते जी। मैं एक बात और कहूँगी। आजकल बच्चों को प्रेशर कभी नहीं डालना चाहिए। उनको थोड़ा चॉइस देना चाहिए। अपनी चॉइस से अपनी लाइफ है, उनको अपनी लाइफ बिताना है। पहले का समय चला गया। हम लोग कैसे शादी किए, दूसरे माता पिता के पेरेंट्स के कहने से, वो दूसरा समय था। अब जो है अगर वो कहते हैं तो उनकी सुनिए, अगर वो किसी को चूज करते हैं तो उन्हीं से शादी करने देना चाहिए। ठीक है ममता जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड यस that's a good point जी। आयशा, जो तीनों कॉलर्स थी, आई विल सम इट अप क्योंकि पॉइंट्स अच्छे हैं। और देखें, दिस ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट कि हम जब अपने तय अपनी फीलिंग्स के साथ सोच समझ कर रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी करेक्ट। सबसे पहली कॉलर ने कहा था कि किस तरह दूसरे पेरेंट्स को समझाएं कि वो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालें। ये हमारा मसला ही नहीं है। हम अपने घर को एक एग्जाम्पल बनाएं ताकि के लोग यहाँ से देखें कि इनके अंदर कम्युनिकेशन है कि नहीं है। और हमारा घर भी इम्परफेक्ट होगा क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। वन ऑफ द मैसिव factors leading to pressure or anxiety is perfectionism. जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम हर तरह से, हम लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे बीच तो झगड़े भी नहीं होते, हमारे बच्चे तो बड़े ताबेदार हैं। बच्चे हमारे ताबेदार हैं, कभी मस्ती भी करेंगे, कभी उनका गुस्सा भी आएगा, फिर भी मेरे दिल के टुकड़े रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि दूसरों को समझाने में बड़ा दिमाग लगेगा, छोड़ दीजिए। हाँ, दूसरे अगर आपसे बात करने आए कि भाई वो शादी नहीं कर रहा है, ये वो, आप अपनी बात कह दीजिए, भाई मैं तो ये सोचती हूँ, आगे तुम क्या कहती हो। सो दैट्स कम्युनिकेशन चैनल। जिस तरह एक और कॉलर ने कहा, राब्ता बहुत जरूरी होता है, राब्ते खुले रहें। तो कहीं भी राब्ते खुले रहें, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हर जगह द एबिलिटी टू स्पीक। एक और कॉलर ने कहा था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जब आप किसी की सिंसियर कोई तारीफ करते हैं तो आप इमीडिएटली उनकी अटेंशन स्पार्क करते हैं। यानी कि आप टीनेजर को भी कहेंगे कि तुम्हारे जूते बड़े अच्छे हैं, उसके कान जरूर खड़े होंगे। वो जितना भी पाँव घसीटता हुआ गुस्से में बेजार होके भी उस पार्टी पे आया होगा, अगर किसी ने कहा भी, वो योर शूज आर रियली नाइस, इट्स गुड टू हैव यू हियर, और व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू क्रिएट एन ओपन कम्युनिकेशन चैनल। जब हम तारीफ, हमारे पास ये भी हो सकता है,
ये कैसे जूते पहन के आ गए, तुम लोग तो कहीं नजर ही नहीं आते। भाई आजकल के बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। Yeah. दोनों ग्रीटिंग के जुमले हैं, विच वन इज गोइंग टू वर्क? यूज योर हेड्स। बिल्कुल। ठीक है, और यूज योर हेड से पहले दोनों जुमले प्रैक्टिस करके देखिए कौन सा आपके दिल और सीने पे अच्छा बैठता है। अच्छी बात कह के आपको खुद अच्छा लगेगा, अच्छी बात कहेंगे और जब वो बच्चा मुस्कुरा के या ट्यून इन भी करेगा आपको खुद अच्छा लगेगा। हम अपने आप को उलझाए रखते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्लाह जाने अगला लम्हा क्या कहता है। हमारी एफिकेसी इस मोमेंट में हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। अगर बहुत गुस्सा भी आया है, बहुत खौफ भी हो रहा है, रिमाइंड योरसेल्फ कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर खौफ या गुस्से को गालिब होने दिया आपने अपने ऊपर कि मैंने अगर अभी इस बच्चे की बात सुन ली तो कल को ये करेगा, परसों को ये करेगा, तरसों हमें सड़क पे फेंक देगा, सोचें कि आप क्या करें। ठीक है, चलें जी, हमारे साथ कॉलर है रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो हेलो जी, दोबारा कॉल कीजिए। 9725019390 है स्टूडियो का नंबर। अतिया, कुछ कॉलर्स ने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो रिबेलियस हो जाते हैं, ठीक है। कुछ हम कहते हैं एंड इट they take it in a sense and then they become rebellious. What is that caused by, and particularly जो हमारी एक thought and language, एक communication style है, can you just shed some light on this? Rebellion always happens when your rights are not met. When your rights are not met. Okay. Anywhere in the world. I ठीक mean, है। there is no two things. अब हाँ। बात, और फिर हम हर चीज को पैथोलॉजाइज भी करने लगे हैं। बच्चे ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप उसको रिबेलियन कह रहे हैं। शख्सी आजादी, वही राइट्स की बात हो गई ना, कि अगर वो अपनी पसंद नापसंद बता रहा है, वहां से बात शुरू है, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर यही होगा कि वो चीजें पटखेगा, फिर घर से निकल जाएगा, या whatever। अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए वो किन जराए को इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो रिबेलियस जराए इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है शायद कहीं बात सुनी नहीं गई है। ठीक है। तो कई दफा एज पेरेंट्स वी हैव टू अपनी अना और अपनी ईगो का गला घोंटना होता है और सोचना होता है कहीं मुझसे कोई गलती हुई, क्या मुझसे कोई कोताही हो रही है। एक कॉलर ने कहा ना कि बच्चे ने, उनके बेटे ने फोन पे बात किया था एंड ही पिक्ड अप हर इमोशन इवन दो शी डिडंट इंटेंड इट टू। कई दफा ऐसे होता है कि हम गुस्से में होते हैं, गम में होते हैं, बच्चे, ये तो बड़ा बच्चा था उसने पिक किया और सवाल कर लिया। छोटे बच्चे नहीं पिक करते, वो कहते हैं अम्मी का मूड खराब है, मैंने कुछ किया होगा, वो सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं। बिल्कुल। दिस इज एन एक्सरसाइज, रिमेम्बर कि बच्चा पिक कर रहा है किसी भी एज पे, एंड आपके पास हक है गम और गुस्से का, बट उसको बता दें आई एम रियली एंग्री टुडे बट इट्स नॉट यू। I'm angry because the tire was flat, or whatever happened, or I've had a stressful day at home. तो आप कंपार्टमेंटलाइज करना सीखें, आप उसको तो सेफ स्पेस दें कि वो बात करे। अगर आप हर वक्त गम और गुस्से में हैं, काम पे मुसीबत आई हुई है, सासू से तंग कर रहे हैं, तो बच्चा तो फिर रिबेलियन नहीं करेगा क्योंकि उसकी सुनी नहीं जा रही। उसकी माँ इमोशनली मौजूद ही नहीं है उसके लिए कि उसकी बात सुनी जाए। तो वो अटेंशन किस तरह लेगा? वो वही चीजों क्रिएट करेगा जिससे कि माँ अटेंशन देती है, मसलन ग्लास तोड़ दिया या गाड़ी मार दी या समथिंग लाइक दैट, where he is guaranteed to get माँ का गुस्सा, चपेड़े, whatever. But that's an unhealthy form of communication. So that's a cry for attention by the child. Or their form of unhealthy communication. ठीक है. Okay, so there I think two distinct ways that a parent actually applies pressure. एक direct pressure होते हैं जहाँ पे yelling, complaining, बच्चों को force किया जाता है for so many things, right? Or there are other very passive aggressive ways also. हमने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, देखो हड्डियां घिस दी तुम लोगों के लिए, माँ बाप छोड़ के यहाँ के बैठ गए और तुमको कोई परवाही नहीं है। क्या all of these things, what are we doing?
Yeah. Guilt tripping is a great way that parents actually apply pressure on their children. Can you talk a little bit about that? Yes, इसके क्या consequences होते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आफ्टर अ वाइल जिन चीजों पे आप गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, एक तो ये होता है कि या तो बच्चा ट्यून ऑफ कर जाता है कि इनकी रोने की आदत है और कंप्लेन करने की आदत है, तब वो आपकी अच्छी बात भी नहीं सुनेगा। दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे में सारी उम्र के लिए गिल्ट बैठ जाता है और वो हमेशा हर रिलेशनशिप में बैकफुट पे रहेगा और खुशी खारिज हो जाती है। देखिए, जब हम गिल्ट में रहते हैं, जीते हैं, पता नहीं मैं इफ आई एम डूइंग इनफ, आई एम नॉट डूइंग इनफ, ये गुनाह वो सब, तो खुशी कैसे पहुंचेगी? तो आप अपने बच्चे की जिंदगी से खुशी हटा रही हैं। गिल्ट के साथ, गिल्ट इज द मोस्ट इंसिडियस इमोशन। कॉन्शियसनेस इज हेल्दी, रिमोर्स, तौबा इज हेल्दी, बट गिल्ट तो ये है कि आप उस लम्हे से निकल ही नहीं पाते कि मैंने एक दफा अम्मी का बेहतरीन ग्लास तोड़ा था, अम्मी के जहेज का था, आई कैन नेवर ओवरकम दैट। हालांकि उसकी हैसियत हमारी जिंदगी में क्या होगी? कुछ नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरी जिंदगी पे मोहित हो जाए। गिल्ट, लेकिन गिल्ट जो होता है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, गिल्ट आपको खुश नहीं होने देता, गिल्ट आपको किसी भी रिलेशनशिप में एंजॉय नहीं करने देता है। सो गिल्ट तो वैसे ही एक रेड फ्लैग है। एज अ मदर, एज अ चाइल्ड, एज एनी रिलेशनशिप, प्लीज गिल्ट हो तो आप गौर कीजिए, ठहरिए, एक्सप्लोर कीजिए, किसी से बात कर लीजिए कि मैं गिल्ट में हूँ। गिल्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेकिंग अनवारंटेड अटेंशन। मुझे तो बड़ी गिल्ट है कि आप इतना काम करते हैं। गिल्ट है तो आप क्या करना चाहती हैं इसके बारे? गेट इट ओवर विद। सो जो, और अब मैं आपको बताऊं कि अच्छे इंस्टीट्यूशन सब कुछ, पढ़ाई में भी बच्चों में कंपटीशन कम हो रहा है। आईवी लीग्स जो है एसएटीज को खत्म कर रहे हैं, जीआरईज को, क्योंकि जिस जमाने में हम अब जी रहे हैं उसमें प्रेशर इज बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव। ये जब शुरू तब हुआ था जब दुनिया में स्पेस थी टू टेक द प्रेशर एंड देन डिस्पर्स इट इनटू अदर एरियाज, आप प्रोडक्टिव होते थे। सो व्हाट वर्कड देन इज नॉट वर्किंग नाउ। Pressure is the last thing that will get us good results. बिल्कुल बिल्कुल। Let's see, we have a caller. Radio Azad, you're on the air. जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा अगेन। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा रिबेलियस होता है और आप उसको, दूसरा पेरेंट जो है, वन पेरेंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बट द अदर पेरेंट इज सेज नो, इसका तो दिमाग खराब है। You know, when they don't, how to handle that situation, because it is very hard when one person is understanding but the other person is not even willing to understand the person. और दूसरी जो आपने और मिसाल दी डॉक्टर अतिया ने कि मैंने इसको ये दे दिया, मैंने इसको ये दे दिया। अगर बच्चे ने एक स्पेसिफिक चीज आपसे मांगी है लेकिन आप वो चीज नहीं देते, उसके बदले में चाहे आप उससे दुगनी महंगी चीज दे देते हैं, इट इज नॉट, पेरेंट्स कहते हैं ओ हमने तो तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी चीज दे दी है, लेकिन यू आर स्टिल नॉट हैप्पी अबाउट दैट। So how do you handle those kind of situation? Because that kid doesn't want that expensive thing. The money doesn't, money tag doesn't matter to him. The quality or that product matters to that person. So how to handle those kind of thing? कि नहीं, एक parent जो है वो समझता है कि नहीं, the money is not that much important, but the other thing is more important, and the other person says कि नहीं मैंने इसको इतना दे दिया, still that person is rebellious, ये नाशुक्रा है, he doesn't care about that, so if you can put some इसके ऊपर कुछ light डालें तो I think it will be lot easier for us also. ठीक है शाहिदा जी, थैंक यू। जी आई थिंक मैंने इसी सवाल का जवाब पहले भी दिया है और आयशा मुस्कुरा रही हैं, मैं फिर से देती हूँ। दो पेरेंट्स कभी भी शायद बहुत आइडियल घर होते होंगे जहां एक पेज पे होते हैं, तो हमारे ऊपर हमारी चॉइस है कि हम अपनी एनर्जी जो पेरेंट हमसे
अग्री नहीं कर रहा है, बच्चे से अग्री नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर उलझते रहें, या हम कहें हाँ उनको नहीं समझ आ रही बट आई एग्री। आप अपनी बिहेवियर की सिर्फ जिम्मेदार हैं। अब दूसरे की जिम्मेदारी जो आप पे आती है कि बच्चा शिकायत करने आ रहा है, अब्बा नहीं समझ रहे या अम्मी नहीं समझ रही, आई नो दे आर नॉट गेटिंग इट। यहाँ जजमेंट ना लाएगा, वो तो है ही ऐसे, वो तो हमेशा, उन्होंने तो मेरी जिंदगी भी अजीरन की। ये टेस्ट है आपका। स्टे इन द मोमेंट, स्टे विद द इशू एट हैंड, स्पीक योर पर्सपेक्टिव कि मैं तो अग्री कर रही हूँ ना, मगर अगर आप भी इसलिए अग्री कर रही हैं कि पार्टीबाजी है, कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, ये तो हमेशा ही ऐसे रहे हैं और ये तो इनका तो आदत है चीखने चिल्लाने की, तो आपका अग्रीमेंट भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इंटेंट जो है वो कंटेमिनेट हो गई। सो अगेन कमिंग बैक, एज अ पेरेंट हमारा हक है कि हम अपने बच्चे की बात गौर से सुन रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अंदर से। हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, मगर डर भी लग रहा हो, डिफरेंट इमोशंस हैं। आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना है और दूसरे को जजमेंट नहीं करनी है, दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। ये रिश्ते निभाने के तरीके हम बच्चों को मॉडल कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी अब्बा पे गुस्सा आ रहा हो, कह दीजिए मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बट लीव इट देयर इन द मोमेंट। पुराने गड़े मुर्दे ना लाइए, तो हियर एंड नाउ बड़ा जरूरी होता है कि इसी लम्हे में रहें, ना तो आगे की फसीलें खड़ी कर दें कि आगे भी यही होगा, ये तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, इनका तो दिमाग खराब है, इन्होंने तो सारी उम्र मेरी जिंदगी अजीरन किए रखी, इनका तो खानदान ही ऐसा है। इट्स यू आर नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द टॉक्सिसिटी। आपकी मोहब्बत भी बेमायने हो जाएगी उस वक्त। आपने सिर्फ अपनी बात का जवाब देना है, एंड यू कैन बी ट्रू ऑल्सो। अच्छा, फिर दूसरा आपने सवाल किया कि वो बच्चा मांग कुछ रहा है, वो दे कुछ रहे हैं, टफ, यू कैन ओनली एग्री, आई एम सो सॉरी तुम्हें तुम्हारी मर्जी की चीज नहीं मिली, दैट्स ऑल। आप अपनी, आपकी बिसात और आपकी स्वाबदीद या आपकी ऑटोनॉमी, आपकी अथॉरिटी जहां तक है, यू कैन जस्ट वर्क विद दैट। Interesting. Um, so much to gather and so much to process, Atiya. 9725019390. We just have a couple of minutes left, so if you want to call in, then this is your chance. We've talked about guilt tripping. Of course, we've talked a lot about emotional abuse, verbal abuse over the segments that we have done, the impact of that. I find we as parents tend to give a lot of criticism, constant criticism of our children. You don't look right. Instead of saying, beta thoda sa health ka apna khayal rakho, ने वेट पुट ऑन किया है, धूप में बहुत काले हो गए हो, इस तरह की चीज़ें, लाइक गिव अ लॉट ऑफ वी लव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर एवरीथिंग, पर्सनल अपीयरेंस से लेके परफॉर्मेंस से लेके तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन द वे वी communicate that to our children is through this constant barrage of criticism. How can we, what language can we use to encourage our children without constantly having to criticize them? आयशा, जो बात कही आपने, ये सारी यू लैंग्वेज कहलाएगी। तुम मोटे हो गए हो, यू आर फैट, यू आर डूइंग दिस, यू आर इन द सन। हम आई लैंग्वेज सिखाते हैं। Mm-hmm. आई फील योर फेस इज लुकिंग डार्कर, Hmm. आई फील यू आर गेनिंग वेट, हैव यू गेन्ड वेट, फिर आप उसको मौका दें। सो आई एंड यू का तनासुब रखें लैंग्वेज के अंदर। ठीक है. बात आई से शुरू कीजिए, मगर यू जरूर डाल लीजिए। Hmm. अगर आप सिर्फ आई से शुरू की और आई पे खत्म कर दी, गड़बड़। यू से शुरू की, यू पे खत्म कर दी, गड़बड़। Mm-hmm. आई से शुरू कीजिए, यू को इनवाइट कीजिए। दिस इज जस्ट अ वे। आई फील कि तुम्हारा कमरा गंदा है, व्हाट्स योर प्लान? आई हेट गोइंग इनटू योर रूम, इट मेक्स मी गो नट्स।
what are you going to do about it? हो सकता है अगला मुस्कुरा के कहे nothing, just stop coming to my room, right? Yeah. And you may not like it. उस वक्त सोचें कि अब मैं इसके साथ डिसएंगेजमेंट में रहूं, आई हेट इट, उफ़ो, और यू कैन से इट्स माय हाउस, दिस इज अ रूल, व्हाटएवर, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस, आई एंड यू, बट खाली यू पे रह गए, खाली आई पे रह गए, वहां गड़बड़ें होती हैं। एक बात। दूसरी एक मैं आज की पूरी कॉन्वर्सेशन में दैट आई फील आई हैवंट टच्ड इज शादी। शादी का ये है आयशा कि हमें ये फिर वही बात है, व्हाट इज द रीजन दैट वी वांट देम मैरिड। पहले वहां से बात अपने आप से शुरू करें, हम क्या चाहते हैं इसकी शादी से। अगर तो अपना एक बुलेट पॉइंट टिक करना चाहते हैं, हमने शादी कर दी, इतनों का खाया हुआ है, उनको खिला दिया, अपना घर बार संभाले, व्हाट इज द रीजन, क्लैरिटी क्या है हमारी, क्यों शादी करना चाह रहे हैं। शादी तो करनी है भाई, क्यों करनी है, क्या चाहिए। मेरी अजम्पशन है हम इसलिए चाहते हैं शादी करना कि बच्चा अपने घर बार को चलाए, खुश रहे, उसकी औलाद हो, बरकत हो, यही चीजें चाहते हैं ना। बिल्कुल। अब अगर उसने वो किसी ऐसे पार्टनर को लेके आया है जो कि हमारे दिमाग से बिल्कुल गैर मुनासिब है, नहीं पसंद आ रहा आपको, दे कुड बी, हो सकता है कि वो एक टैटूड, पियर्स्ड एंड ड्रगी जंकी को लेके आ गया, आपकी जान निकल गई कि ये मेरी औलाद क्या कह रही है। I'm just creating a very polarized situation and they are not going to listen. क्या आप कहें तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो शख्स मेरी बहू नहीं बन सकती या दामाद नहीं बन सकता, आपने शट डाउन कर दिया, और चांसेस हैं कि वो जरूर शादी कर लेगा। आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो नहीं समझ आ रही तुम्हारी क्या क्या चीज तुम्हें देखी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी हम ये देखते हैं कि मैं और मेरी औलाद दो सिरों पे आ चुकी है बिल्कुल और कोई बीच का रास्ता नहीं है, द फर्स्ट आइडिया इज टू क्रिएट अ मिडिल ग्राउंड, फाइंड इन आवर कॉन्वर्सेशंस अ मिडिल ग्राउंड। अगर हम दोनों अपना अपना पॉइंट पकड़ के बैठ जाएंगे, ये प्रेशर है और यहीं से टूट फूट शुरू होती है। सो यू कैन आस्क, बेटे मुझे तो नहीं समझ आ रही, हमारे हिसाब से तो नहीं, बट क्या चीज तुम्हें पसंद आ रही है। वो कहेगा बहुत नेचर बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल करते हैं, ओके, आई एम स्टिल कंसर्न्ड एंड सिंस वी वुड लव टू गिव आवर ब्लेसिंग, हाउ अबाउट वी गेट टू नो हर एंड यू कोट हर, आप कोई स्पेस लीजिए। बट अगर आप फौरन ही कहेंगे दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ओवर माई डेड बॉडी, you are shutting down, you're not really listening to them, you're only speaking your perspective, क्योंकि आपके अंदर इतना खौफ आया कि इससे मेरी नस्ल चलेगी, ओ माय गुडनेस क्या होगा, तलाक भी हो जाएगी, हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे, ये आई डोंट नो, हियर एंड नाउ से भी आप हट गए, आप खौफ के तहत आ गए, आप तमाम गुफ्तगू अब खौफ और मिसट्रस्ट से कर रहे हैं। दैट्स अ डिससर्विस टू योरसेल्फ। दिस इज अ चाइल्ड दैट यू हैव brought into the world, raised, कुछ ना कुछ तो आपने इसकी गुट्टी में डाला होगा ना। Right. Yeah. Absolutely. It's a very different way of looking at things, and it's a very civilized way of looking at things. And I think we have to really sit back and, like you said, know yourself first. आपकी likes, dislikes, preferences क्या हैं? What are your, जो misconceptions or whatever concepts that are steeped in our own culture, and what are we bringing to the table? And then how are we presenting this to our children? It's a very, very different way of looking at things. Absolutely. क्वेश्चन आया है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का ऑन आवर फेसबुक पेज। तो अतिया इसके बारे में क्या कहते हैं कि जब आप एक हाउस, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिकम अ बज़वर्ड of our times, whereas that's not truly the case.
right? So what do you think, like growing up in a narcissistic personality disorder household, इसकी क्या impact होती है बच्चे के ऊपर? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो मैंने शुरू में भी कही थी, हम पैथोलॉजाइज कर देते हैं ओसीडी, नार्सिसिज्म, एंजाइटी, व्हाटएवर डिसऑर्डर को इस तरह से लूजली उछालना इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू द मेंटल हेल्थ Yeah. सिस्टम। Mhm. खुद पसंद, इंतहा पसंद पेरेंट्स हो सकते हैं जो बात नहीं सुन रहे हैं, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं, सेल्फिश हैं, बट नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर की बहुत सारी चीजें होती हैं और हम किस तरह से कह देते हैं, एंड इट्स रियली, फिर वो शायद वैसे करने भी लगते हैं। जी। हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन के ऊपर। अगर मैं अपने किसी बच्चे को ये तो बहुत एंग्शियस है, बहुत एंग्शियस है, एंग्शियस है, वो हो जाएगा एंग्शियस। सो बी वेरी केयरफुल, लेट्स नॉट पैथोलॉजाइज। तो अगर ऐसा घर है जहाँ माँ बाप बस अपने ही अंदर, अपने ही ख्वाहिशों में, अपने ही वैल्यू सिस्टम में, अपनी ही बिलीफ सिस्टम में है और बच्चे की नहीं सुन रहे, तो क्या करें? और अगर आप अडल्ट हैं, अब एज अ चाइल्ड, अगर आप अडल्ट चाइल्ड हैं, सो रियलाइज व्हाट इज इट दैट यू आर नॉट लाइकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, stop trying to change them, work around them, create frequent distances. But if you are going to try to change, if you're going to fight, you're going to actually end up feeling worse in your own body and in your own thoughts and feelings. The reason that you're wanting to understand your environment shows that you want to connect. It is up to you. They have failed you, which is why you're probably asking this question. It is up to you to find ways to connect with them by creating frequent distances. Working with knowing कि मेरी अम्मी की ये blind points हैं, कि यानी मैं खाला को कुछ कहूँगा तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगी, या you know, so those are blind areas. Understand those, work around those. कभी भी हम ये नहीं कहते कि immediately cut off कर दीजिए, उसमें आपके दिल में एक पैंग रह जाता है. So I always work with what do you want, how much can you expend yourself, and how would you like your relationship to be in an ideal world, knowing the limitations of your life. ठीक है. I want to flip this before we wrap up the show, and that is, if there is a child who is feeling a lot of pressure from their parents, what is one way that they can go to their parents and say, you have to stop this? A lot of times kids are very hesitant to do this. आप बच्चे को क्या कहेंगी कि what is one way that they should start this conversation, initiate this conversation? I think अगर वो बच्चा नहीं प्रेशर महसूस किए जा रहा है, एंड इफ दे गो एंड स्पीक, उसके बैक ऑफ द माइंड पे होगा मेरी अभी सुनी तो नहीं जाएगी, ये कहेंगे हमें पता है जो भी. Yet I would urge this child to speak, express, put it in words, even if you don't believe that you'll be heard. As psychotherapists, we work with the premise everybody is trying to do the best they can in life. Those parents also. So, हमारा काम है express करना, बार बार express करना, खफा भी होना if they are not listening. But you will be clear in your head, I spoke. I said my piece. So please express to your parents, and जब हम पहले से formulate कर लेते हैं ये नहीं सुनेंगे, maybe they will. It's choosing to work with mistrust or choosing to work with trust. Trust in yourself, trust in your relationship. मैं हमेशा intent की बात करती हूँ. Less on the action, more on the intention. हो सकता है आपकी इंटेंट बहुत गुस्से से बन रही हो, and I'll be that these people, they are so
XXX, but they're never ever going to listen to me. बहुत गुस्सा है. You are probably using a foul letter word to think. So be it. It's okay. It's perfectly fine. आपका गुस्सा is also indicative कि कहाँ से गुस्सा आ रहा है. Is it only about parents, or is it about you're not doing well in life? Is it that you are failing on some other thing? Maybe you're, building up your body, whatever. जब हम गौर करते हैं कि कहाँ गुस्सा कहाँ से आ रहा है, इन पे ही आ रहा है सारा, या मुझे जिम पे भी गुस्सा आता है, मेरी लव लाइफ इज नॉट गोइंग वेल, इट विल गिव यू क्लैरिटी टू वर्क थ्रू लाइफ. पर अगर एक्सप्रेशन का सोचा ही नहीं, पहले ही से यू थॉट कि आई हैव नो ऑप्शन. वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस, both for parents and for children. Till we are alive, we have options. Just believe in it. Perfectly said. Thank you so much, Atiya. Absolutely wonderful segment and learned a lot as always. Aapka koi phone number that you would like to give out, or email for our listeners? Yes, my email is atiya.naqvi, NAQVI 70@gmail.com. Perfect. All right. Again, thank you so much. And inshallah, we will come up with another topic in our mental health segment. Sure. Again, Thank you for having me. Allah Hafiz. Allah Hafiz. All right. And you're listening to Coffee Connection on Radio Azad. Make sure that you have downloaded the Radio Azad app to listen to our programming coming your way.